So hello candidate and welcome to the Government Crackers, and in this video we are going to talk about the CDS to 2020 SSB and the FSB complete preparation strategy for joining any of these academy, that is Indian Military Academy, Air Force Academy, Naval Academy or the Officers Training Academy. So if you want to join any of these academy and it is your passion and dream to be a defense officer, then you need to join any of these academy. For that, the second stage that you need to qualify is AFSB or SSB. So if you clear any of these two tests for Air Force FSB and for Navy and Army, you need to clear this SSB, and OTA is also included in this. So if you crack any of these two of the respective tests, then you can join the IMA, AFA, NA or OTA. So we are going to tell you very important things in this video, that what are the toppers timetable that you need to follow to crack this FSB or the SSB, as well as what are the books that you require to study to crack this examination, and how much time is required for the preparation. So time is very important. Okay, so all these things we are going to discuss in this video, so stay tuned with us and let's discuss one by one all these things. So first of all, we would like to tell you that the batch for the SSB as well as the AFSB preparation is now being starting from the 16th of November. Okay, from 16 November 2020 we are starting the new batch for the CDS entry, as we all know that now the techniques are being so advanced and students are so advanced in their preparation that after giving their examination on the 8th November, now they have analyzed lots of answer keys and they have matched that what marks they can score, and those students who are very sure that they can clear their CDS examination for respective academies, they have started their preparation for the SSB as well as the AFSB. So we are also starting the latest batch for all these things from the 16 November. So before that, those who want to join can join and take their material from the site, that is governmentcrackers.com. So let's move into the video and discuss the further things. So first of all, there are 20 types of test in SSB, okay, or the FSB. Now बिफोर मूविंग इनटू द वीडियो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछना चाहते हो, हमेशा आप लोग यही पूछते हो कि एक्चुअल में एनी ट्रिक और टिप आपको कोई बता दी जाए, एनी ट्रिक और टिप जिससे आप SSB को क्लियर कर सको या फिर FSB को क्लियर कर सको. एंड आर टिप इज़ कि इफ़ यू आर वेल अवेयर अबाउट द प्रोसेस, okay, then you know what to do in the respective test. Okay, what to do. Okay, अगर आपको ये सब चीज़ें पता है कि एक्चुअल में क्या रियल प्रोसेस है, then you will also aware about what to do in that process, as well as one more important thing जो आपको इसमें पता होनी चाहिए कि what actually SSB, SSB और AFSB required from you. Okay, so just think for a while कि n number of candidates जाते हैं. Okay, n number of candidates go for SSB and the FSB for various entries. ठीक है, बट ऐसा क्या है विच SSB इज़ लुकिंग फॉर, दिस SSB इज़ लुकिंग फॉर इन अ कैंडिडेट, और उसमें से ज़्यादा कैंडिडेट फेल हो जाते हैं. ऑलमोस्ट जो सिलेक्शन रेशियो है दैट इज़ लेस देन 3%.
ओके, सो ऐसा क्या है जो एसएसबी में रिक्वायर्ड होता है और कैंडिडेट्स इसको समझ नहीं पाते हैं. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट व्हाट एक्चुअली द प्रोसेस इज, and once you are aware about the process then you definitely know that what you need to do. okay, एक्चुअल में आप लोगों को यही नहीं पता होता है कि प्रोसेस क्या होता है, एंड देन व्हाट एक्चुअली एसएसबी वांट दैट यू नीड टू परफॉर्म ऑन दोज प्रोसेस. और आप जब ये सब चीज़ें नहीं जानते हो तो आप उसमें कुछ मगअप कर देते हो जिसकी वजह से आपका रिजेक्शन हो जाता है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंप्लीट प्रोसीजर इन वन गो. डे वाइज हम देखेंगे कि क्या प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में आपको क्या क्या करना है और कितना टाइम लगेगा आपको प्रिपरेशन के लिए, और एक्चुअल में व्हाट दे रिक्वायर्ड इन दैट प्रोसेस. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन इज डे वन. ओके, सो इन डे वन what are the various activities that is being conducted there is, there are two tests. okay, written test. okay, so one will be your verbal and another test will be non-verbal. okay, so one test will be verbal test, another one will be the non-verbal test, and after giving these two tests, the another thing that you will give is your PPDT. okay, now you need to write a story in this examination. okay, after that a group will be formed and you need to discuss your story among the group, that is GD, your group discussion, and after that you need to conclude the story and then finally result will announce. okay, so this is the complete procedure of day one, and after that what you need to do is, those who can qualify the first stage, they need to fill their PIQ form. This is complete procedure of day one. okay, then in second day what you need to do is, this day is allocated for psychology. okay, so in psychological test, what is the first test is, this is VAT, that is also known as word association test. Then you will give TAT, and this is thematic apperception test, and the third test that you will give is SRT, that is situation reaction test, and after that you will give SD, that is self description test. So these are the different tests that you will give from second day, and in second day onwards your interview will also start. okay, so first of all I need to erase this. So from the second, it may be optional interview. okay, so interview will start from the second day. Then third day, this is your second day, this is your third day. okay, in third day this is allocated for GTO, that is ground technical officer. okay, or they will say ground task officer. okay, so in first you will give the GD. okay, in this GD they will give you two topics. okay, one of which you will choose and do a GD on that, and another topic is been given by the GTO and you do not have an option on that, and you need to discuss on that topic itself. Then after GD you will go for GPE, that is group planning exercise.
Just after that you will go for lecturate. Lecturates, and then after you will go for PGT, that is progressive group task, and after that you will go for intergroup obstacle race, or in short form we will say that snake race. And after that you will go half group task. Just after that you will go for command task. Okay, and interview is optional. माइट बी पॉसिबल अगर जिन लोगों का इंटरव्यू सेकेंड डे में हो गया है उनको यहाँ पर ब्रेक मिलेगा, एंड दोज हु आर लेफ्ट हो सकता है उनका इंटरव्यू थर्ड डे पड़ जाए. देन वी आर गोइंग फॉर द फोर्थ डे, एंड कमांड टास्क को वी कैन डिवाइड, दैट कैन हैपन इन द थर्ड डे ऑल्सो, और फोर्थ डे में भी हो सकता है. ओके तो यहाँ पर इसे मार्क डाउन कर लीजिए कि कमांड टास्क फोर्थ डे भी हो सकता है और थर्ड डे भी हो सकता है. दैट डिपेंड अपॉन the time that is allocated to the GTO. Then in the fourth day we have the final group task, that is FGT. Then after that you will go for individual obstacle. Individual obstacle. Then the remaining candidate will go for interview. Okay, so this is all about the complete process of the 4 days. So in the first day, this is also known as in short form screening. Then the second day is allocated to the psychology, the third one is for the GTO, and the fourth one is again for the GTO itself. Okay, but the tasks are FGT, individual obstacle, and the interview for the remaining candidates. And the fifth day, most important, is conference. In conference, what you need to do is, it's a very simple process but most important. It's a table like this, a U-shaped table, where the board of president will sit here, and the remaining officers in their proper uniform, they are sitting here. Here is a chair, and this is a gate. The gate will be there, or it will present here. Okay, so here is your chair. You need to go from here, ask their permission, go and sit there, and they will ask you certain questions here. Okay, and the conference is of about 30 seconds to 15 minutes, depending upon the candidate to candidates. So this is all about the various types of tests that is been conducted into the SSB. So यहाँ पर आपको इसीलिए बताया गया है कि ये इतने तरीके के डिफरेंट टेस्ट होते हैं. अब हर टेस्ट में अलग अलग अप्रोच होते हैं सॉल्व करने के क्वेश्चंस, टाइम को मैनेज करने के, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एसएसबी और एफएसबी में है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट. एंड फॉर द एफएसबी कैंडिडेट्स, उनके लिए यहाँ पर पीएबीटी टेस्ट भी होता है. ठीक है, दोज हु आर गोइंग फॉर एफएसबी. ओके, दैट विल हैपन ऑन द फर्स्ट डे. ठीक है, ऑन फर्स्ट डे. ओके, ये आपका फर्स्ट डे हो जाएगा. और उसके बाद अगर आप ऑप्ट करोगे कि अगर आप पीएबीटी के लिए सेलेक्ट नहीं होते हो तो क्या आप फर्दर प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहोगे, तो आपको फर्दर डे रोका जाएगा. और अगर आप सिर्फ पायलट के लिए जाना चाहते हो तो फिर आप आउट हो जाओगे अगर आपने क्लियर नहीं किया. ओके,
So this is all about the different kinds of tests which you need to go through while you are going for the SSB. So that's why a thorough preparation for this is required. And if you have a time for around 20 to 30 days, if you give a proper time, follow the schedules which we have told you, then definitely you can crack the SSB or the AFSB. Okay, so now discussing the other important points in this is how much time for preparation. Okay, already told you that if you have 20 to 30 days, okay, then you can do one go preparation for the SSB. Okay, but if you want a proper preparation for this, then the more time you can give, the more practice you can do is better for you. Okay, क्योंकि आप सभी जानते हो कि CDS का एग्जामिनेशन आप क्रैक कर लोगे, लेकिन SSB का इंटरव्यू और SSB का इंटरव्यू या फिर AFSB अगर आपका एम है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रैक. ओके, सेकेंड स्टेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड द सिलेक्शन रेशियो इज़ लेस देन 3%. सो इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए. नाउ व्हाट बुक शुड वन स्टडी विथ. ओके, तो कौन कौन सी बुक्स आपको चाहिए होंगी इसके बारे में वी विल डिस्कस. ओके, सो दिस इज़ कंप्लीट बुक पैकेज फॉर योर प्रिपरेशन which we are offering you of government crackers. Okay, तो already told you कि जो बैचेस स्टार्ट है वो 16 नवंबर से हैं. तो आपका SSB का जो सिलेक्शन सेंटर होगा उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो वो आपकी इस बुक से क्लियर हो जाएगी. देन रिपोर्टिंग में आपके डॉक्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम आती है उसका सारा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाएगी. देन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 2 टेस्ट होते हैं आपके, एक वर्बल नॉन वर्बल, वो आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो. देन PPDT और थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट जो आपका है उसके लिए आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो. इसमें 250 प्लस आपको स्टोरीज मिलती हैं एंड दैट इज़ मोर देन इनफ. ओके, देन ऑल्सो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इस बुक से आप प्रैक्टिस करोगे एंड सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ग्राउंड टेक्निकल ऑफिसर वाली जो भी एक्सरसाइजेज हमने आपको अभी डिस्कस की वो सब यहाँ पे मिल जाएंगी. देन लेक्चरेट, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज और आर्मी से रिलेटेड आर्मी अफेयर, एयरफोर्स अफेयर, ये सारी चीज़ें आपको बुक में मिलेंगी. देन मेडिकल स्टैंडर्ड्स एंड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. और जिन लोगों की इंग्लिश वीक है दे कैन इम्प्रूव इट बाय दिस बुक. सो दिस इज़ द कंप्लीट पैकेज दैट वी आर ऑफरिंग. दैट्स वाई द वन पैकेज दैट कैन सॉल्व ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम. एंड in the course you will get 50 plus video packages. These book, complete set of book, doubt clearing session, weekly assignment, defense blogs, personality development tips and tricks, then preparation strategy, medical tips, spoken English classes and interview tricks and tips. These all are the free add-ons that you will get in addition in this course. That is your newspaper subscription, then free membership of government crackers, मंथली मैगजीन, स्पेशलाइज्ड डिफेंस मैगजीन. ये डिफेंस की मैगजीन है जो गवर्नमेंट क्रैकर्स ने रिलीज़ की है, इंडिया की फर्स्ट डिफेंस मैगजीन. ऑल द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए अगर आप परेशान रहते हो तो इससे आपकी सॉल्व हो जाएगी. डेली वोकैबलरीज मिलेंगी और डेली करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं. और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा governmentcrackers.com साइट के ऊपर. ओके, आपको इस साइट के ऊपर जाना होगा. ओके, यहाँ पर आप इस साइट के ऊपर जाओगे और वहाँ पर आपका SSB कोर्स अवेलेबल होगा. ठीक है, द नेम ऑफ द कोर्स विल बी SSB, दोज हु डू नॉट नो अबाउट इट. ठीक है, और जो लोग एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं दे कैन ऑप्ट फॉर AFSB कोर्स. ओके, दैट इज़ अवेलेबल. स्टार्टिंग डेट ऑलरेडी टोल्ड यू 16 नवंबर एंड वी हैव अ वेरी लिमिटेड सीट्स. ओके, सो the all thing will be based on the first come first serve. Then one important thing, all the study material will be delivered to you in one go. ठीक है, और within 24 hours आपको आपका मटेरियल मिल जाएगा and you can start your preparation. Okay, so don't waste your time, it's very precious time and you can prepare yourself better than other candidates. Okay, that can
showcase when you are giving your SSB or the FSB. That's why most of the candidate is already started their preparation, and those who want to really do a hard work and want to prepare for the CDS2 for FSB or the SSB, they can join the batch from the 16th. We are starting our course. So before that you can have your material, and once we will start the batch, you can go through with us and start your preparation. Already told you the site is this, that is governmentcrackers.com. For any query related to the course, you can call on the number that is 9971289418. Okay, for any query related to the course, you can call on this number. And if you have any query, you can also go to the forum of Government Crackers that is available on the site, and you can post your doubts there. Let's start the course from the 16th November. Till that you can have your course. So for today's that's all. Jai Hind.